Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is use of multiple operations in OpenOffice org. This is your OpenOffice org calc. In this we are going to use multiple operation function. Multiple operation function. It is another planning tool other than GoalSeek, and in other words we can say that it's an advanced version of GoalSeek. Why advanced version? Because GoalSeek function evaluates an input, single input value for a target, target thing. But in multiple operation function you can evaluate more than one input. मीन्स कि GoalSeek में आप केवल एक बार में एक ही इनपुट मतलब सर्च कर पा रहे थे, लेकिन मल्टीपल ऑपरेशंस में हम कुछ इनपुट डालेंगे और उसके बिहाफ में हमको क्या क्या मल्टीपल इनपुट्स मिल सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे. मल्टीपल ऑपरेशन फंक्शन हेल्प इन दिस केस. व्हाट इफ a person has more than one goal? As in GoalSeek, person has only one goal, but what if a person has more than one goal? For this, multiple operation function help in this case. If a person has more than one goal, thus it evaluates more desired outputs. What does it? It evaluates more outputs based on target values, not value, target values. This allow you to calculate result separately. You do not need to run them separately. आप उन्हें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम GoalSeek में अलग अलग के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते थे. यहाँ पे at once और at one go you can calculate all the positive inputs in order to achieve your more than one desired goal. अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. Let's do practically. For example, this is प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये सेम एग्जाम्पल लिया था फिक्स कॉस्ट का. हम वन टाइम पे वन निकाल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है और हमें चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट हमारा 25,000 पे हमको मिल जाए. 25,000 तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे थे वन बाय वन. देन गो टू डेटा एंड वेयर इज माय टूल GoalSeek ना. देन टारगेट वैल्यू इज 25,000. आई नीड टू 25,000. then selected cell variable is, let's suppose amount. तो 25,000 मुझे तभी मिलेगा जब मैं अमाउंट 69,444 निकालूंगा. बट ये तो वन टाइम के लिए हुआ कि जब मैं 69,000. बट व्हाट इफ अगर मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट है या इतना ही अमाउंट है, तो मैं नंबर ऑफ ईयर्स पे चेक कर सकता हूँ, रेगुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चेक कर सकता हूँ, या कितने इनिशियल अमाउंट पे मैं उसको अमाउंट बढ़ा सकता हूँ. तो यही चीज हमारे क्या मल्टीपल डिजायर्स हैं. अब इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज माय फिक्स्ड डिपॉजिट. आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट. फिक्स्ड डिपॉजिट then this is going to 20, then time 20, SI 20, 26, 26 अब विजिबल हो जाएगा. 26, then this is 26.
formula of simple interest is P into R into T divided by 100. Okay, we have P, principal amount, say fixed deposit, B 20, this is B and this is 20, B 20 into P into R into T, P, sorry, rate of interest, this is B 21, then time 5 years, B 22 divided by 100 and calculate हो गया ये. Now अब मेरा टारगेट ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, I want to know about if I want to invest 25,000, then what will be my SI, simple interest. If I am going to invest 40,000, then what will be my simple interest. So in order to calculate more desired outputs, I have to do one thing. I'm just writing my desired output. I want to calculate simple interest based on my investment. Let's say my investment is 5,000, then what will my SI, then 10,000, then 15,000, then 20,000, then 25,000, then 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, and lastly 50,000. So I want to calculate my simple interest on the basis of available investments. These are more target values, and I want to calculate more input values. So first is you need to select your fixed deposit amount and empty cell. just इसके बाद वाला इसको हमने सिलेक्ट कर लिया. देन गो टू डेटा, select multiple operators, formulae. It means you have to input the cell address which contains formula, and I want to calculate SI, that's why I am using SI. Then input means what we have, on what value we want to calculate. We want to calculate on deposit amounts. So here my target is 10,000 because it will calculate rest of the amount on the basis of this formula. Click OK. See, at 10,000 SI is 36,000. Okay, formula is successful. Now if I am going to invest 5,000, I will get 18. If I am going to invest 40,000, I will get 14,400 as a simple interest in 5 years, and the rate of interest is 7.2. If I am going to invest 50,000, I will get 18,000. So in this way you can get your more than desire. Okay, now another thing, if I want to calculate number of years, then what will be my SI? Let's suppose 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, अगर मैं 13 years तक इन्वेस्ट करता हूँ, लेट्स सपोज 13 years तक नहीं, अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने साल में क्या क्या आ जाएगा, गो डेटा
multiple operators, SI, because I want to calculate SI. Then number of years. Then this time I am going to choose number of यहाँ के लिए ये हो गया, यहाँ के लिए number of years. In 5 years, formula is true. In 5 years, I'm getting SI as a 36, and if I invest 10,000 for 6 years, then I will get 4,320 rupees. If I'm going to invest 10,000 for 13 years, I will get 9,360 rupees. Okay. Now, let's do on rate of interest. सेवन से स्टार्ट कर रहे हैं. 7.0, 7.1, 7.2 up to 8. Let's 10.2. तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई दे रहा है तो मैं उस बैंक में डालूंगा ना. लेट्स सपोज कि अब मैं SI कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. सेम थिंग, सिलेक्ट एम्प्टी सेल वाला एरिया भी. Then go to data, multiple operators. I want to calculate SI. Now this time I go for rate of interest, because rate of interest के ऊपर हमें क्या करना है, उसे calculate करना है. Okay, see, let's suppose 7.2, 3600, 7.2 3600 formula is good. Now if let's suppose rate of interest 7, then I will get 3500. If any bank provide me 9.2, then I will get 4,600 for the same amount and same period of time. Okay, in this way you can calculate more desired inputs based on more desired outputs. Bye students.